बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरिश आलम। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हाउस डेमोक्रेट्स ने सदर जो बाइडन के बेहतर मंसूबे की तामीर पर तबादला ख्याल करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आइए नजर डालते हैं। This infrastructure package makes the largest federal investment in public transit ever. The largest federal investment in passenger rail since the creation of Amtrak. The single largest dedicated bridge investment. Coverage with the Patient Protection and Affordable Care Act by buttressing the price supports for these plans. And reversing the sabotage that has occurred to the Affordable Care Act over the last half dozen years. But taking care of little kids at home, with money for health, for child care and for pre-K, universal pre-K, that's a really big deal. When I talk to employers back in my district in northeastern Pennsylvania, the biggest lament is that they can't fill entry-level jobs, retail and restaurant jobs, they can't fill them. Our local Chamber of Commerce did a survey and they found that 54% of the people. सदर जो बाइडन ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 में एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन और तैनाती तकरीब में रिमार्क्स दिए और वहां पर शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं कुछ मनाजिर। Overriding purpose here in Glasgow is to raise the ambitions of our commitments to keep within reach our goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius. But setting ambitious targets is only half of the equation, as you all know. We also have to have concrete plans for how we're going to meet those goals and decarbonize our economies to reach net zero emissions by 2050. To start, state the obvious, we have to immediately scale up clean technologies that are already commercially available and cost competitive, like wind and solar energy. In the United States, we set a goal of deploying 30 gigawatts of offshore wind by 2030, creating tens of thousands of good-paying union jobs for American workers, and meeting the power needs of almost 10,000 American homes every year. We can do this now. We don't have to wait. At the same time, we recognize that our current technology alone won't get us where we need to be. So it must also be a decisive decade for innovation, developing, demonstrating, and commercializing new clean energy technologies by 2030 so that they can be widely deployed in time to meet our 2050 net zero goals. बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन का नाकामी के नताइज पर जोर देते हुए ग्लासगो में COP26 सरबराही इजलास का आगाज। बाद में दीगर रहनुमाओं ने कार्बन के इखराज को कम करने और काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाने के मंसूबों का खाका पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तबाकुन मौसमियाती तब्दीली के बारे में खबरदार किया है। जब तक के आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ना रखा जाए, लेकिन अब तक मौसूल होने वाले वादों की बुनियाद पर वो हदफ छूट जाएगा। Leaders from nearly 200 countries have arrived in Glasgow for this crucial summit. Many say it's their last chance to take concrete action to prevent climate catastrophe. In the opening ceremony, they were warned about the consequences of not doing enough. And it's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging. And their children. And we are now coming centre stage before a vast and uncountable audience of posterity. And we mustn't fluff our lines or miss our cue. Because if we fail... The advanced nation has made ever. We're going to cut U.S. greenhouse gas emissions by well over a gigaton
by 2030. इस्लामाबाद में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का फैसला वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया। इस्लामाबाद दफातर ब्रिगेड सर्विस का दोबारा पंजाब के तर्ज पर इस्लामाबाद में रेस्क्यू 1122 का आगाज किया जा रहा है। 1122 के फायर सर्विस, एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज शामिल होंगी। रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज इसी माह में किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 सर्विस में इब्तदाई तौर पर 20 गाड़ियां शामिल होंगी। दूसरे मरहले में गाड़ियों की तादाद को बढ़ाकर 40 किया जाएगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाया जा रहा है। सर्विसेज और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को अपग्रेड करने की फौरी ज़रूरत है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आग बुझाने और इमरजेंसी हैंडलिंग और मशकों का मुआयना भी किया। जनवरी में अंटारियो की कम से कम उजरत $15 फी घंटा होगी। प्रीमियम ड्रग फोर्ड अगले साल अंटारियो की कम से कम उजरत को $15 फी घंटा तक बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं, जो 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होगी। साबिक प्रीमियर कैथलीन वाइन ने 2019 में कम से कम उजरत $15 फी घंटा तक बढ़ाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स ने 2018 में इस मंसूबे को खत्म कर दिया था और कहा था कि अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली अफरात ज़र की शरह से कम उजरत बढ़ेगी। मौजूदा कम से कम उजरत $14.35 फी घंटा है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में PTI के वाइस चेयरमैन और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़ेर सदारत पंजाब कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। आइए नजर डालते हैं। चीन के शहर शंघाई में दुनिया के मुमताज़ साइंसदानों के आलमी फोरम का इनकाद हुआ। दुनिया के मुमताज़ साइंसदानों का चौथा आलमी फोरम 1 नवंबर को चीन के शहर शंघाई में शुरू हुआ। इस फोरम का मकसद बैनुल-अक़वामी साइंसी बरादरी में आला सतह और मुकालमे के लिए एक प्लेटफॉर्म की तश्कील देना था। 3 रोज़ा फोरम में 68 नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों समेत साइंस अवार्ड पाने वाले 131 आलमी साइंसदान और चीन के बेहतरीन साइंसदान शरीक हो रहे हैं। मौजूदा फोरम का मौजू है ओपन साइंस, एक खुले इख्तराई माहौलियाती निज़ाम की तामीर। फोरम के दौरान तकरीबन 100 कॉन्फ्रेंसेस और सरगर्मियों का एहतमाम भी किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देसी टीवी USA और क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।